This conference will now be recorded. Okay, so guys, just give me just 2-3 minutes, right? Let's just start in 2-3 minutes. So I just closed previous session, so I'll just start. Just give me 2 minutes. Hello. Yeah, hey class. So let's get started. Right. So we will be starting with the linear discriminant analysis, right? So which stands for LDA. Okay. So right, like what we have done up till now is, if I just quickly do a little bit of a recap of the things that we have done. Right? So we have seen some stuff like, how do we do the linear regression, right? We have seen how we can create
how we can do the logistic regression. Then we have done something on the basis of decision trees, right? So what is decision trees, right? Yes, And similarly, yes. right, then we have something that is linear discriminant analysis, right? So these are the next technique that we will be understanding over here. Now, linear discriminant analysis, this is also called as LDA. Okay, this is also something that is called as LDA or linear discriminant analysis. This is, this is a different kind of a technique. I mean, different not in the context that uh, we do not use it for predictive modeling and all. It is something that we use for the purpose that it can be used for two purposes. First of all, for the predictive model, plus it can also be used for the feature selection process. Feature selection means, see, up till now what we have done is, what we used to do was, we used to run our model, right? We used to run our model, and what happened used to then was, a model used to give us the significant values of all the variables. And based upon, like, if the value is more than 0.05, we ignore the variables. We say that, okay, this variable is not that significant, so we can ignore this. But if suppose I give you a data which has 2000 variables, okay, the data set has 2000 variables, and then you start creating your model on that, what will happen is, there are high chances that your system might get stuck, because you have so many variables that you have fed it into that data set, that your model will be stuck, and you will be like, your system will be stuck, and you won't might be able to proceed. So LDA is one technique that will help you, that before you create your model, you can actually get an idea that which variables are useful and which are not. So if suppose out of those 2000 variables, only 500 variables are significant, then don't you think it will be a better approach, in a sense that you will be actually, instead of running your model with 2000 variables, you will only execute your model with the 500 variables which are significant, right? आपके पास 2000 variables थे, आपने पहले केस में क्या किया, आपने 2000 वेरिएबल्स से अपने मॉडल को रन कर दिया, तो उसमें बहुत चांसेस है, क्योंकि वेरिएबल्स इतने ज्यादा हाई हैं कि आपका शायद मॉडल स्टक हो जाए. सो इसलिए आपने क्या किया, पहले सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स निकाल लिए, और फिर उसके बाद अपना मॉडल क्रिएट किया. So now this is also one of the use case that linear discriminant analysis has. So let's try to understand this in a lot more detail, right, with the help of the presentation. Okay. So the idea will be, in this over here, what we will be doing is, we will be understanding the need of a classification model. We will understand what exactly LDA is all about. We will use LDA in the R. Then we will also use the LDA for the purpose of we will also do the classification process with the help of LDA over here now. Okay, so why do we need a classification model? So first of all, who will tell me what is a classification model? What is a classification model? Miss Class, anyone who can define what is a classification model? Like like in every model, we need to extract our valuable information using the data set. So, like coming to the conclusion from the the respective values, so that will help us to classify our classify the data basis to create a model. No, so basically, what happened is, like, there are two kind of models that we have. One is regression and one is classification. Regression is that model in which you predict some continuous data. Like, you have to predict the salary, you have to predict the profit, you have to predict the quantity. That is called as regression model. Classification model is one where you predict the data which is in the form of a category, like whether a person will buy the product or he will not buy the product,
whether a person will die or whether a person will survive, whether a person will make the payment or he will not make the payment. That is called as classification. Okay, so logistic regression that we studied, that was an example of classification. Decision trees, is it a classification model or is it a regression model? It's a both. Both. It's a both, right? So decision Yeah. trees can be used for classification also and regression also, both. Now similarly we have one more model, and that is LDA. Okay, now LDA is also a technique that is used for classification. We use Hello LDA. सर. सर और डिसीजन ट्री हमने पूरा नहीं किया था सर. हमने टेस्ट और ट्रेनिंग डेटा सेट बना के आपने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करते हैं. तो उसका कुछ मॉडलिंग पार्ट रह गया था उसमें. यस सर. चलो मैं उसके बाद करा देता हूँ मैं आपको. मैं इसके बाद आपको इसके बाद तो डिसीजन ट्री स्पेक कर लूँ. उसका जो मॉडलिंग पार्ट, आपको थ्योरी वगैरह और कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था ना उसका क्या होता है बेसिकली, कि डिसीजन ट्रीज में ब्रांचेस क्या होती हैं, गिनी इंडेक्स और काई स्क्वायर, वो सब हमने करे. हाँ, फिर तो हमारा मोस्टली हो ही गया है वो. सिर्फ लास्ट का मॉडल क्रिएशन रह गया, प्रोडक्शन. आई विल डू दैट. आई विल शो यू दैट. ठीक है. Okay, so now over here in this LDA technique, what we do is this is also one type of a classification model only. इसमें भी आप क्या करते हो बेसिकली, आप जैसे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया या डिसीजन ट्रीज यूज किया, इसमें भी आप कुछ कैटेगरीज को ही प्रेडिक्ट करते हो, लाइक वेदर अ पर्सन विल बाय और वेदर अ पर्सन विल नॉट बाय. बट द डिफरेंस ओवर हियर इन द LDA इज, LDA के केस में जो आपके टारगेट वेरिएबल होते हैं, सॉरी प्रेडिक्टर वेरिएबल होते हैं, वो सारे के सारे न्यूमेरिक होते हैं, राइट. प्रेडिक्टर वेरिएबल क्या होते हैं आपके, जैसे आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल, राइट. जब आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्रिएट करते हो, तो जब हमने बैंक वाला डेटा यूज किया था, राइट, हमने बैंक वाले डेटा के ऊपर एक वो क्रिएट किया था ना अपना, क्या कहते हैं, कि बंदा डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, राइट. सो वी यूज दैट मॉडल. सो इन दैट मॉडल व्हाट वाज हैपनिंग वाज, हमारे पास डेटा बहुत सारे टाइप का था. उसमें कितने का अमाउंट का क्रेडिट कार्ड उस बंदे ने लिया हुआ है, और कितना उस बंदे का क्या जेंडर है, हमारे पास वो सारी इंफॉर्मेशन भी थी उसमें. अब जेंडर क्या है, न्यूमेरिक डेटा नहीं है, राइट. जेंडर इज नॉट न्यूमेरिक, but still logistic regression was able to give me the correct results based upon that, whether a person will buy it or whether a person will not buy it. Now over here in this case, what happened is, in the case of LDA, what we do is we take only those kind of data sets. आप सिर्फ उसमें वो data set लोगे जिसमें आपके predictor variable जो है वो numeric है, और जो आपको प्रेडिक्ट करना है वो कैरेक्टर है, राइट. जैसे कि मुझे एज और सैलरी के बेसिस पे प्रेडिक्ट करना है कि क्या कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेगा या नहीं लेगा. ओके, so suppose this is something that I want to predict. Now this is something that can be done with the help of LDA model, and it will give you high accuracy as well. So let me give you a small use case. एक छोटा सा use case लेंगे यहाँ पे to understand this. Let me just clear off the screen. Okay, अब से फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने यू हैव अ कंपनी, और आपने क्या किया, कुछ वो छपवाए, बहुत सारे 1 लाख आपने पैम्फलेट छपवाए, ठीक है. अब आपने जब 1 लाख पैम्फलेट छपवाए, तो आपने 1 लाख लोगों को बांटे होंगे वो, राइट. आप लोगों ने अगर 1 लाख पैम्फलेट छपवाए तो आपने 1 लाख लोगों को बांटे होंगे वो. और जब आपने 1 लाख लोगों को बांटा, तो उसमें से 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया. ओके, अब सपोज करो एक पैम्फलेट की कॉस्ट $2 थी, तो आपने कितने पैसे खर्च किए, आपने 1 लाख लोगों को अपना पैम्फलेट बांटा, और एक पैम्फलेट को छपवाने की कॉस्ट $2 थी, तो आपने कितना पैसा खर्च किया मार्केटिंग पे, $2 लाख. $2 लाख, ठीक है. उसमें से 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो यानी एक कस्टमर को परचेज करने में, आपको एक कस्टमर को अपना एक कस्टमर बनाने में कितने पैसे लगे आपके, $200.
200 या 2000? 200 ना 2 लाख 1 2 3, हाँ 200, ठीक है। $200 लगे आपके, यानी एक कस्टमर को एक्वायर करने में आपकी कितनी कॉस्ट आई? $200 बक्स। अब आपकी कंपनी बोलती है यार बॉस ये तो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, एक कस्टमर को एक्वायर करने में अगर $200 लगेंगे तो ऐसे तो हमें बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, राइट? तो कंपनी ने कहा कुछ ऐसा करो कि आप किसी तरीके से पहले डेटा के ऊपर मॉडलिंग करो कि कौन सा कस्टमर खरीदेगा कौन सा नहीं खरीदेगा। तो आपने कहा कि हम 1 लाख को नहीं बांटते, कुछ ऐसे 20,000 लोग पकड़ के लाओ कि जिसमें अगर हम उन 20,000 लोगों को अपना पैम्फलेट दें तो उसमें से 1000 नहीं तो कम से कम 900 लोग तो हमारा प्रोडक्ट ले ही लें, ठीक है। तो अब आपने अगर 20,000 लोगों को पैम्फलेट बांटा और आपकी पैम्फलेट की कॉस्ट $2 थी, तो आपने टोटल पैसे कितने खर्च किए? $40,000 खर्च किया आपने। तो एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट कितनी आई उस केस में? यू कैन गिव अप्रोक्सीमेट आंसर, ऐसा नहीं बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर देना है। अराउंड $20, राइट? आप लोग आपने 20 नहीं 40,000 डिवाइडेड बाय तो $40, 44 पॉइंट समथिंग, हाँ। हाँ $44-45 आएगा। तो यानी आपकी कॉस्ट $200 से घटकर $400 और $40 हो गई, 1/5 हो गई कॉस्ट आपकी, राइट? तो ऐसे केसेस होते हैं, राइट? दीज आर द काइंड ऑफ रीजंस दैट व्हाई द कंपनीज स्पेंड सो मच मनी ऑन द एनालिटिक्स। समझ रहे हो? क्योंकि एनालिटिक्स की हेल्प से कंपनी अपना बहुत पैसा बचा सकती है। इसीलिए हर कंपनी आज के टाइम पे दे आर स्पेंडिंग ह्यूज मनी ऑन बाय मेकिंग एनालिटिक्स टीम्स एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन डेटा साइंस एंड डेटा इंजीनियरिंग। अब ये सारी चीजें होती हैं एक्चुअली में, राइट? क्योंकि अब देखो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो, आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी भी उसमें जाते हो, क्या कहते हैं, बड़े मॉल में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो, वेरेवर यू गो यू सी बिग होर्डिंग्स ओवर देयर, बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज के। अब वो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होते हैं उनके, राइट? आपने देखा होगा एयरपोर्ट के पास अगर आप जाओगे तो एयरपोर्ट के पास आपको महंगी महंगी गाड़ियों के बैनर लगे हुए मिलेंगे, राइट? अब वो एयरपोर्ट पे अपना बोर्ड लगाने का एक दिन का खर्चा कम से कम 10 लाख रुपए, right? Company spends 10 lakh rupees for each day to put their advertisement over there। और सोचो अगर उन्होंने एक महीने तक अपनी एडवर्टाइजमेंट वहां लगाई हुई है तो 3 करोड़ रुपए तो उन्होंने सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर खर्च कर दिया। अब उस एडवर्टाइजमेंट को देखकर अगर लोग आए ही नहीं, कोई किसी कस्टमर ने गाड़ी खरीदी ही नहीं, तो टोटल वेस्टेज हो गया ना, वो पैसा तो वेस्ट हो गया, जीरो हो गया। इसलिए कंपनी हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। उनको वो पहले पूरा एनालिसिस करती है कि कहाँ पे अपना मुझे बोर्ड लगाना चाहिए कि जहां से हाई चांसेस हैं कि हमें नए कस्टमर मिल जाएंगे। ओके, सो these are some examples where this classification are required। तो दिस इज एन एग्जांपल जहां पर आप क्या कर रहे हो कि बेसिकली पैम्फलेट बांटने से पहले आप अपने लोगों के ऊपर डेटा एनालिसिस कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि कौन से लोगों के लेने के चांसेस हैं और कौन सो के नहीं है, ताकि आप अपना पैम्फलेट सिर्फ उन्हीं लोगों को बांटो जिनके चांसेस हैं कि वो खरीद सकते हैं, और जो नहीं खरीदेंगे आप फिर उनके ऊपर पैसा अननेसेसरीली वेस्ट नहीं करोगे। ओके, राइट। सो द target is to get almost all the responder by working on only part of the population, right? तो आपका टारगेट क्या है कि बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करो जो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, ठीक है? सो दैट इज व्हाट द आइडिया इज। सो दिस इज द पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन है n, उसमें k रिस्पॉन्डर है, राइट? x% ऑफ द पॉपुलेशन n एंड y% ऑफ द रिस्पॉन्डर k। यानी आपने क्या किया, आपकी पॉपुलेशन में 1 लाख लोग थे, यू हैड 1 लाख पीपल, उसमें से 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। तो आपको कुछ ऐसी मॉडलिंग करनी चाहिए कि जिसकी हेल्प से क्या हो कि आपने सिर्फ 20% लोगों को अपनी, क्या कहते हैं, अपनी एडवर्टाइजमेंट की, लेकिन उस 20% में से जो ये यहाँ पे आपके जितने रिस्पॉन्डर आए थे उसके 90% 80% लोगों ने वो प्रोडक्ट खरीद लिया, राइट? तो इस चीज को, टू अचीव दिस काइंड ऑफ अ टारगेट वी एक्चुअली यूज क्लासिफिकेशन मॉडल्स अ लॉट। ओके, समझ रहे हो मेरी एग्जांपल, समझ रहे हो यहाँ पे आप?
अब सपोज करो, अगर आपको मैंने कहा कि ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि इफ सपोज आपने 1 लाख लोगों को अपना पैम्फलेट दिया और उसमें से 1000 लोगों ने आपका सामान खरीद लिया, 1000 लोगों ने आपका सामान खरीद लिया। फिर आपने क्या किया, आपने कहा नहीं यार, ये तो 1 लाख लोगों में से 1000 लोग ही आए हैं, ये तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है। आपने अगली बार सिर्फ 10,000 लोगों को अपना पैम्फलेट बांटा। अगर 10,000 पैम्फलेट लोगों को आपने पैम्फलेट बांटा और उसमें से सिर्फ 100 ही लोग आए, तो किस में ज्यादा बेनिफिट हुआ आपका? आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, पहले वाला दूसरे वाला, दिस और दिस? This class, which is a better option out of these two? और दोनों के केस में आपकी कॉस्ट $2 है, $2 पैम्फलेट की कॉस्ट है आपकी। यहाँ आपने 1 लाख लोगों को बांटा और 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद लिया। यहाँ आपने 10,000 लोगों को बांटा और 100 लोगों ने आपका खरीद लिया। तो कौन सी टेक्निक में आप ज्यादा सक्सेसफुल रहे? भुवन से सेकंड। फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो आपने 2 लाख लगाए और आपको 1000 मिला। यहाँ आपने 20,000 लगाए तो आपको 100 मिले। तो आपको ऐसा लगता है कि दोनों के दोनों सेम ही है? दोनों के केस में आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो तो $200 ही आ रही है ना, तो टेक्निकली तो दोनों सेम ही। हाँ, बात तो बराबर ही है। उसमें आपने 1 लाख लोगों को बांटा तो 1000 मिल गए। जब आपने लोग कम किए तो आपके नंबर ऑफ रिस्पॉन्डर भी कम हो गए, आपके जिन्होंने आपका प्रोडक्ट खरीदा वो लोग भी कम हो गए। सो टेक्निकली हम यहाँ पर क्या समझाना चाह रहे हैं कि हमारा गोल क्या होना चाहिए, कि हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम लोग क्या करें कि अपना प्रोडक्ट 10,000 लोगों को बेचें, बट उसमें से 500 लोगों ने खरीद लिया, तब तो बेनिफिट है मेरा, राइट? तब तो उसमें मेरा बेनिफिट है। ओके, सो यही चीज मैं आपको इस एग्जांपल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जो आप एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हो, कहाँ गया वो? सो दिस व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने, आपकी पॉपुलेशन n थी, 1 लाख लोग थे और उसमें से 1000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा, तो हमारा टारगेट क्या होता है कि हम कुछ ऐसा मॉडल बनाएं कि हम सिर्फ उसमें से कुछ परसेंट को, पॉपुलेशन को अपना पैम्फलेट बांटे, पर उसमें से जो लेने वाले लोग हों वो ज्यादा हों। सो y शुड बी मोर देन x। ओके, इस परसेंटेज से ज्यादा हो। कि आपने अगर 20% का सैंपल लिया, अगर लोग भी 20% ही रह गए तो आपका कोई फायदा नहीं हुआ, राइट? लेकिन आपने 20% सैंपल लिया और उसमें से 40% लोगों ने उसमें सब्सक्राइब कर लिया, तो यानी आपका जो मॉडल है वो अच्छा बनाया आपने, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा कि आपने सही ऑडियंस को टारगेट किया और उसमें से सही लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीद भी लिया। So that is one example where we use classification models a lot. Okay. So what is the purpose of LDA? So where does this LDA comes into the picture? So LDA is a model that we use for two kind of purposes. हम अपने LDA मॉडल को दो टाइप के पर्पसेस के लिए यूज करते हैं। पहला, फॉर वेरिएबल सिलेक्शन। ठीक है, पहला पर्पस क्या होता है हमारा LDA को यूज करने का? वेरिएबल सिलेक्शन। कई बार क्या होगा, आपके पास डेटा सेट के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वेरिएबल्स होंगे, तो अगर आपके पास 1000 वेरिएबल मैंने आपके डेटा में आपको दे दिए, तो आप क्या हो गया, अगर आप उस पूरे डेटा को अपने मॉडल में डाल दोगे, सो देयर इज अ हाई चांस कि शायद मॉडल आपका स्टक हो जाए। ओके, कि आपका मॉडल आपका स्टक हो जाए और वो बोले कि यार द मॉडल आपका, सिस्टम आपका हैंग हो गया और आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। सो इसलिए हम क्या करते हैं, हम LDA टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो उससे हम उन 1000 वेरिएबल्स में से पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये 300 वेरिएबल मेरे सिग्निफिकेंट हैं, तो आप अपने मॉडल में सिर्फ वही 300 वेरिएबल्स पास करोगे रेदर देन पासिंग ऑल द 1000 वेरिएबल्स। मेकिंग सेंस? यस भुवन, एकता, कोमल?
अमित, मेरे को एक क्वेश्चन है कि लाइक हम तो जितने भी मॉडल्स क्रिएट कर रहे हैं लॉजिस्टिक या लीनियर रिग्रेशन, उस सब में तो हम वेरिएबल सिलेक्शन करते हैं, लाइक हम फिल्टर आउट तो करते ही हैं कि ना व्हाट आर द रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। नहीं देखो उसमें क्या होता है ना, जैसे जब हमने फॉर एग्जांपल जब हम आपने स्टार्ट किया वहां से, जैसे हमने उस पे काम किया था बैंक डेटा के ऊपर, राइट। मैं एक बार ये खोलता हूँ, देखो एक बार थोड़ा आपको समझाने के लिए। ये आपने क्या किया था स्टार्टिंग में, आपने जब हमने ये लॉजिक रिग्रेशन वाला मॉडल क्रिएट किया था जहाँ पे हमने चेक किया था कि बंदा बिल की पेमेंट करेगा या नहीं करेगा, तो उस केस में हमने पहले जब मॉडल क्रिएट किया था, हमने मॉडल में अपना फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने लिखा था फॉर्मूला इक्वल्स टू डिफॉल्ट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल द वेरिएबल्स। लिखते थे डॉट, डॉट का मतलब वो डिफॉल्ट हमारा सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। फिर हम अपना यस। मॉडल रन कर देते हैं तो फिर हमारे पास वेरिएबल्स के ऊपर पी वैल्यू आती है, जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे वैल्यू 0.05 से कम है, करेक्ट। जहाँ पे वैल्यू 0.05 से कम होती है फिर हम उन्हीं वेरिएबल्स को रखते हैं और अपने मॉडल को रीरन कर देते हैं। यही अप्रोच लेते हैं हम लोग। अब देखो, अब अगर आपके वेरिएबल 1000 होंगे, राइट, अगर आपके वेरिएबल 1000 होंगे तो उस केस में क्या होगा, तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं कि आपका मॉडल स्टक हो जाए, क्योंकि आप पहले क्या कर रहे हो, मॉडल रन कर रहे हो, फिर आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन से वेरिएबल सिग्निफिकेंट है। लेकिन एलडीए आपकी उस चीज में हेल्प कर सकता है कि वो आपको पहले बता देगा कि कौन से वेरिएबल सिग्निफिकेंट हैं, तो आप अपने मॉडल में सिर्फ वही वेरिएबल्स पास करोगे और अपने मॉडल के ऊपर अपना प्रेडिक्शंस निकाल लोगे। तो आपको कहीं ना कहीं 1000 वेरिएबल पास नहीं करने पड़े, सिर्फ आपको अपने 200 या 300 वेरिएबल जो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं, आपने उन्हीं को अपने मॉडल में पास किया। ठीक है, क्लियर? या अदर्स, इज इट क्लियर टू ऑल? यस सर। Okay. So now the another use case of the LDA model is for classification. तो आप LDA मॉडल के बेसिस के हेल्प से आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हो कि whether a person will buy or a person will not buy। तो आप ये चीज भी उस पर कर सकते हो। So you can do both the things। आप अपना वेरिएबल सिलेक्शन भी कर सकते हो और आप अपना क्लासिफिकेशन भी कर सकते हो कि कौन से आपका कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। These are the two purposes for which we use our LDA approach। So आपको मैं एग्जांपल देता हूँ इसका, we will understand it by a small example again। So class, just give me 2 minutes, right? I'll just be back in 2 minutes।
Okay. So let's start from here. Okay, so let's take a small example. Owners versus known owner. Right? एक छोटा सा example है. Basically, this is a small example. So so there is a company who wanted to sell their mowers. Right? Mowers क्या होते हैं आपके, वो घास काटने की मशीन होती है ना आपकी. तो they wanted to sell their mowers. तो उन्होंने देखा, पहले उन्होंने एनालाइज किया कि कितने लोगों के पास मोवर ऑलरेडी है, ताकि उनको आइडिया लग जाए कि कितने लोग, किस टाइप के लोग मोवर खरीदते हैं और किस टाइप के लोग नहीं खरीदते हैं. तो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया लोगों का, उनकी सैलरी का, उनकी इनकम का और उनके लॉट साइज का. लॉट साइज मींस कि उनके घर के आगे कितना बड़ा उनके पास गार्डन है. ओके, तो उन्होंने देखा कि जो मोवर है, जो घास काटने की मशीन है, जनरली उन लोगों के पास ही है जिनकी इनकम ज्यादा है, प्लस उनका जो साइज ऑफ एरिया है वो बड़ा है. राइट, अब देखो यहाँ पे रेड वाले आपके ओनर्स हैं और ब्लू वाले आपके नॉन ओनर्स हैं. ओके, तो उन्होंने देखा कि ये आपका डेटा निकल कर आ रहा है कि ये लोग वो हैं जो ब्लू वाले जिनके पास नहीं है, और ये लोग वो हैं जिनके पास मोवर है. तो इससे आपको क्या आइडिया लग रहा है, किस टाइप के लोग आपका मोवर खरीदेंगे, कौन से लोग आपका मोवर खरीदेंगे? हाई इनकम वाले. राइट, हाई इनकम और हाई लॉट साइज, दोनों चीजें आ रही हैं इसमें. देखो जो जिन्होंने आपका मोवर खरीदा है, बेसिकली वो लोग हैं जिनकी इनकम भी ज्यादा है, प्लस उनका एरिया भी बड़ा है. मोवर का जो एरिया साइज है, जो उनको जहाँ पे उनको घास काटने हैं, वो भी बड़ा है उनका. राइट, अब अगर आपको इसके बीच में आपको लीनियर एक कोई लाइन एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करनी हो, तो कैसे क्रिएट करोगे उसमें बेस्ट फिट लाइन, कहाँ से क्रॉस करेगी वो बेस्ट फिट लाइन? समवेयर फ्रॉम हेयर. राइट, आप ऐसे एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करोगे जो बिल्कुल बीच में से निकल रही हो. तो अगर आप क्रिएट करोगे तो आपने देखा कि ये जो आपने लाइन क्रिएट की, उसमें सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो गलत जा रहे हैं. इस साइड अगर आप देखो तो सारे वो लोग हैं जिन्होंने खरीदा है, और इस साइड वो लोग हैं जिन्होंने नहीं खरीदा है. अगर मैं एक बेस्ट फिट लाइन बीच में से इसके क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है. नाउ दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट LDA मॉडल डज. LDA की जो टेक्निक है आपकी, लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, राइट, लीनियर, प्लीज गो बाय द वर्ड आल्सो लीनियर. तो यानी इसमें भी कहीं ना कहीं लीनियर रिग्रेशन ही यूज हो रहा है in order to predict the results. Okay, riding mower manufacturer एग्जांपल को दे दिया. राइट, सो व्हाट वी डू इज, अगर मैं एक बेस्ट फिट लाइन क्रिएट करता हूँ इस डेटा सेट के बीच में, सो व्हाट यू विल सी इज, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज द बेस्ट फिट लाइन दैट आई कैन क्रिएट. और इस मॉडल में आपका एरर कितना आ रहा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरर रेट? इस पे 24 पॉइंट्स है आपके पास, टोटल 24 लोगों का मैंने एनालिसिस किया था, तो एरर कितना आया इसमें? um 2%. So how have you calculated 2%? Right, Varun? So that is 3 divided by 24, correct? कि तीन लोग ऐसे हैं जिनका प्रेडिक्शन गलत जा रहा है, राइट? क्योंकि देखो ये दो लोग, इन दोनों का प्रेडिक्शन गलत जाएगा, और एक ये वाला. So 3 divided by 24, तो कितना आएगा वो? If you divide it by 3 divided by 24, what will the result be? 300 divided by 24. Let us see it. कैलकुलेटर में कर रहा हूँ मैं अपने उसमें, just calculating this. 300 divided by 0.125. हाँ 0.125, that is 12.5%. यानी आपका जो एरर आ रहा है वो 12.5% का एरर रेट आ रहा है. तो आपकी एक्यूरेसी होगी 88% की एक्यूरेसी. यानी आपका मॉडल आपको 88% की एक्यूरेसी दे रहा है, 12% का आपको एरर दे रहा है. Got it? Okay. So we get a misclassification or an error rate of 3 divided by 24, which is the same that you have all told me.
अब देखो आपके पास आप मल्टीपल लाइंस क्रिएट कर सकते हो इसमें, राइट? यू कैन हैव मल्टीपल बेस्ट फिट लाइंस, बट बेस्ट फिटिंग लाइन वही होगी जहां पे आपका जो एरर है वो सबसे कम आ रहा है, राइट? सो हाउ कैन यू सिंप्लीफाई दिस प्रोसेस? अब ये लाइन आप कैसे क्रिएट करोगे और किस तरीके से इसको बिल्ड करोगे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट एलडीए इज ऑल अबाउट. How can you simplify the process of higher than the threshold value, or how you can make sure that you get a very less error rate, that is something that is called as LDA. अब इस चीज के लिए हम क्या करते हैं ना, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक स्कोर्स का यूज करते हैं. वी यूज अ टेक्निक ऑफ जनरेटिंग सम स्कोर्स. हम क्या करते हैं इसमें, इट इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी ओनली. आपने क्या किया इसमें, आपने क्या किया कि बेसिकली आपने स्कोर दिया. सपोज करो, लेट्स टेक अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. आपको प्रेडिक्ट करना है कि बेसिकली आपका एक आपकी आपकी एक शॉप है एंड यू सेल, आपकी एक शॉप है वेयर यू सेल इक्विपमेंट्स, एंटरटेनमेंट स्टफ एंड बोथ, राइट? सो आपको क्या प्रेडिक्ट करना है कि आपके पास कोई कस्टमर आया तो क्या चांसेस हैं कि वो आपसे सिर्फ इक्विपमेंट का सामान खरीदेगा या इंटरटेनमेंट का सामान खरीदेगा या दोनों खरीदेगा. ठीक है, तो इस चीज को करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम एक स्कोरिंग का टेक्निक यूज करते हैं. हम क्या करेंगे, उस कस्टमर को स्कोर देंगे कि उसका इक्विपमेंट खरीदने के चांसेस का स्कोर है 5, एंटरटेनमेंट का स्टफ खरीदने का स्कोर है 7 और सारा सामान खरीदने का स्कोर है 9. तो जहां पर भी उसका स्कोर ज्यादा आएगा, जिस भी कैटेगरी में उसका स्कोर ज्यादा आएगा, तो हम बोलेंगे कि ये कस्टमर हमारा उस क्लास को खरीदेगा. ओके, उस क्लास को खरीदेगा. तो अगर सपोज को एक पर्सन 1 आया, हमने उसकी स्कोरिंग करी, हमने देखा कि उसका बोथ के लिए स्कोर सबसे ज्यादा आ रहा है. सो माय मॉडल विल प्रिडिक्ट दैट द कस्टमर विल बाय बोथ द आइटम्स. दूसरा कस्टमर आया, उसका हमने स्कोर निकाला तो उसका स्कोर इक्विपमेंट के लिए ज्यादा आ रहा था, इक्विपमेंट में उसका स्कोर ज्यादा आ रहा था, तो हम बोलेंगे कि ये कस्टमर के चांसेस ज्यादा हैं कि वो इक्विपमेंट खरीदेगा. थर्ड कस्टमर के केस में क्या हो रहा था, उसके पास उसका स्कोर आया इंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा, तो मेरा मॉडल क्या प्रेडिक्ट करेगा कि उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो इंटरटेनमेंट का ही प्रोडक्ट परचेज करेगा. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? एनी क्वेश्चंस एनीवन अप टिल हियर? एनी डाउट और कुछ क्लियर नहीं हुआ किसी को? दिस क्लास, एनी डाउट एनीवन? Okay. So what is the formal definition of linear discriminant analysis? Now let us try to understand that. See, linear discriminant analysis is all about using numeric data to decide about a categorical outcome. तो आप linear discriminant analysis में क्या करते हो, आप अपने numeric variables को use करते हो to predict a categorical outcome कि whether a person will buy your product or he will not buy your product. Okay, it is very useful when it is reasonable to believe that the independent variables are normally distributed. तो यानी ये ज्यादा आपको इसकी एक्यूरेसी ज्यादा तब होगी जब आपका जो लीनियर वेरिएबल्स हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? प्लस द नेक्स्ट थिंग इज इट assumes that the correlation among the predictors within a class is same across all the classes. यानी आपका एलडीए का जो टेक्निक है वो assume करता है कि बेसिकली जो कोरिलेशन है वेरिएबल्स का, राइट? तो यानी चाहे वो क्लास 0 हो या क्लास 1 हो, कोरिलेशन सारे वेरिएबल्स का सेम रहेगा. ऐसा नहीं है कि कोरिलेशन क्लास के साथ चेंज हो रहा है. ओके, देन इट कैन बी इजीली एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 कैटेगरीज. आप अपने एलडीए की टेक्निक को जरूरी नहीं है सिर्फ बाइनोमियल के लिए यूज कर सकते हो. You can use it for more than 2 categories also, right? Like the previous example that we were taking a look at, whether a person will buy entertainment stuff or equipment stuff or both. तो आप उसको more than 2 categories के लिए भी use कर सकते हो. And logistic this LDA technique can be used in place of logistic. It is something that can be used in place of logistic regression
So it is a substitute of logistic regression or a decision trees in itself. एक second. Okay. So I know linear this LDA is a technique that you can use as a replacement of logistic regression also, right? So now what I would like to do is, let me jump to a more stuff which is more you can easily which will help you understand better all the stuff. Okay. See, first of all, we will take a look at this small diagram over here. See, this is a diagram that you can all try to see and interpret, which will actually help you to decide when to use which model. अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे के सारे कैटेगोरिकल हैं और आपको जो प्रेडिक्ट करना है वो भी कैटेगोरिकल है, in that case the technique that you should use is that is a decision tree. Okay. अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कैटेगोरिकल हैं और जो आपको प्रेडिक्ट करना है वो न्यूमेरिक है, उस केस में यू शुड यूज रिग्रेशन ट्री, दैट इज अगेन डिसीजन ट्री ओनली. अगर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल सारे न्यूमेरिक हैं और आपको जो प्रेडिक्ट करना है वो कैटेगोरिकल है, in that case you should be using either a logistic regression or LDA, right? अब देखो आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडल्स दिख रहे हैं because there are variety of models that are available in the statistics that can be used for prediction. Okay, तो आपके बहुत सारे मॉडल्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं that can be used. तो अभी क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही मॉडल्स को कवर किया है, लीनियर, लॉजिस्टिक, डिसीजन ट्रीज and LDA, that is we are finally doing over here. So that is why I am just putting focus on the ones that we have studied. और अगर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी न्यूमेरिक हैं और आपको जो प्रेडिक्ट करना है वो भी न्यूमेरिक है, so in that case you should be using either linear regression or a decision tree. So you can use any one of them. Okay, so this is a small table that can help you to understand कि आपको कहाँ पे किस टाइप के डेटा पे कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए. Okay, this is just a small example of that. Is it clear to all? Please, all of you, please take a look at it for a minute. So, Amit, do we need to learn all these types of model, like rest of the models that support vector machine, artificial neural network? Is this all required? See, basically what will happen is some of the models you are learning in the R and rest some of the models you will be learning in your Python training also. तो वहाँ पे आपको सपोर्ट वेक्टर मशीन मॉडल आपको पढ़ाएंगे और वहाँ पे आपको ये दूसरे न्यूरल नेटवर्क भी वहाँ पे पढ़ाएंगे. तो दिस इज हाउ द कोर्स इज डिवाइडेड, क्योंकि अल्टीमेटली मॉडल सेम रहेगा. सो लीनियर रिग्रेशन चाहे आप R में करो चाहे Python में करो, दैट रिमेन्स द सेम. So some of the models you will be learning in your the Python training. Okay. Okay. Yeah, but it is always good, and these are not very much different from each other. All are quite similar. बस थोड़ा बहुत concept इधर उधर change हो जाता है. Otherwise the things remain the same. Okay, क्योंकि अगर आप देखो तो हर टाइप की कैटेगरी में अगर आप देखो तो हमारे वो मॉडल्स आ रहे हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, राइट? न्यूमेरिक के लिए आप डमी वेरिएबल रिग्रेशन भी यूज कर सकते हो, रिग्रेशन ट्री भी यूज कर सकते हो. इस वाले केस में आप लीनियर रिग्रेशन भी यूज कर सकते हो, रिग्रेशन ट्री भी. तो अब ये देखो ये दोनों आपने पढ़े हुए हैं. यहाँ पे आपने काई स्क्वायर वाला भी कॉन्सेप्ट पढ़ा था और डिसीजन ट्री हम लोगों ने पढ़ा है, राइट? अब यहाँ पे देखो लॉजिक रिग्रेशन और एलडीए आपने पढ़ा है. अब ये तीन चार जो मॉडल है ये आपके क्या होंगे, बेसिकली आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग में आपके पास पाइथन में आ जाएंगे. तो वहाँ पे आपको इस पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस मॉडल का क्या पर्पस है. Okay,
So now first of all what we will do is we will try to understand how do we use LDA for feature selection. Okay, now we will come to the main point. Up till now we were just setting up the background. Now we will see how do we use LDA for the purpose of feature selection. So फीचर सिलेक्शन मींस कि अगर आपके पास काफी सारे वेरिएबल्स हैं और ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वेरिएबल आपका उसमें डेटा में क्या कहते हैं, कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है, तो उस चीज को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और कौन सा नहीं है, उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फिशर्स रेशियो। ओके, वी कॉल दिस मॉडल एज फिशर्स रेशियो। ओके, अब देखो ये थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं स्लाइटेस्ट इट विल फील समथिंग सिमिलर टू डिसीजन ट्री, जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट इट विल बी अ लिटिल डिफरेंट टेक्निक बिकॉज ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एंड दिस इज समथिंग दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड that which variable is important and which is not. So let me show you a data set. Okay, so मेरे पास एक डेटा है वाइन क्वालिटी का। Okay, I have this data with me, wine quality. अब देखो वाइन, I mean I'm not a wine lover. Maybe जो people जो लोग, if we have anyone who loves to drink wine, so might be they will be able to understand this better. अब देखो जो वाइन बनती है उसमें कई सारी चीजें होती हैं, उसमें कुछ एसिडिटी लेवल्स होते हैं, उसमें कुछ वॉलेटाइल एसिडिटी लेवल्स होते हैं, कुछ उसमें सिट्रिक एसिड होता है, कुछ रेजिडुअल शुगर होता है, कुछ क्लोराइड्स होते हैं। तो ये सारी चीजों से मिलकर आपकी एक वाइन बनती है। ठीक है, अब ये सारे के सारे वेरिएबल्स आप यहाँ पे देखो जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे वेरिएबल्स क्या हैं, न्यूमेरिक, राइट, ये सारे के सारे न्यूमेरिक हैं। अब इन सारे वेरिएबल्स के बेसिस पे मुझे प्रेडिक्ट करना है कि वेदर अ वाइन इज ऑफ लो क्वालिटी और इज इट ऑफ अ हाई क्वालिटी। ओके, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू प्रेडिक्ट। अभी हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे, राइट, मैं अभी आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ कि अभी हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि जो मेरा प्रेडिक्टर वेरिएबल, जो मेरा टारगेट वेरिएबल है कि वेदर माय वाइन इज ऑफ लो क्वालिटी और इट इज ऑफ हाई क्वालिटी, उस चीज को डिफाइन करने में सबसे सिग्निफिकेंट वेरिएबल कौन से हैं। ओके, कि क्या फिक्स्ड एसिडिटी ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि जिसकी हेल्प से मैं बता सकता हूँ कि वाइन की क्वालिटी लो होगी या हाई होगी, या वॉलेटाइल एसिडिटी ऐसा वेरिएबल है जिसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि वाइन की क्वालिटी लो होगी हाई होगी। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स हैं, राइट। जनरली हम क्या करते हैं, जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा मॉडल रन कर देते हैं और उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहा है, राइट। पर लेकिन हम इसमें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ इस मॉडल को, इस टेक्निक को यूज करेंगे, फिशर्स रेशियो को, टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वेरिएबल की सिग्निफिकेंस ज्यादा है और कौन से वेरिएबल की सिग्निफिकेंस कम है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली पहले एक वेरिएबल उठाएंगे। मैंने सिर्फ ये वेरिएबल उठाया, ये वेरिएबल मैंने उठाया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, बाइफर्केशन करते हैं एसिडिटी के लेवल पे कि कितने केसेस में लो है और कितने केसेस में हाई है। हम देखेंगे कि फिक्स्ड एसिडिटी के केसेस में आई कैन सी, से सपोज लेट मी काउंट इट अप, आपने पहले सिर्फ लो का डेटा उठाया। आप क्या करोगे, लो वाले डेटा के लिए आप इसका मीन निकालोगे, इसका मीन कितना आ रहा है लो के केस में और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है। यू विल फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर लो, देन यू विल कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर हाई, राइट। हाई के केस में मीन कितना आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है, और लो के केस में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ रहा है। आप ये चीजें कैलकुलेट करोगे पहले अपने डेटा में। देन व्हाट यू विल डू इज यू विल कैलकुलेट द मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता, सॉरी, वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस इज नथिंग, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। यू विल कैलकुलेट दिस वेरिएंस ओवर हियर। तो आपने दोनों चीजें कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से फिर आप क्या करोगे, दूसरा वेरिएबल उठाओगे, फिर आप ये वाला वेरिएबल उठाओगे,
और इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, आपने वोलेटाइल एसिडिटी डाल दी। फिर आप वोलेटाइल एसिडिटी चेक करोगे कि उसका मीन और वेरिएंस कितना आ रहा है इन केस ऑफ लो एंड हाई, राइट। आप दोनों का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करोगे। फिर उसके बाद एक हमारे पास फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं फिशर्स रेशियो। ओके, लेट मी शो यू दैट। फिशर्स रेशियो का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। यानी आपने जो दो वैल्यूज कैलकुलेट करी उसमें दोनों का जो मीन आएगा उसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे और उनके अंदर जो वेरिएंस आ रहा होगा उससे उसको डिवाइड करोगे, राइट। यू विल गेट दिस। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिशर्स रेशियो। सो नाउ टेल मी, क्या विल फिशर्स रेशियो बी ऑलवेज बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो? Will my Fisher's ratio, will it come always positive or it can negative also? It can be negative also. सर V1 एंड V2 क्या है हमारा इसमें? अच्छा, वेरिएंस पॉजिटिव आएगा फिर ऑलवेज। हमेशा पॉजिटिव रहेगा, राइट। क्योंकि देखो मीन का हम पहले स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर नंबर पॉजिटिव हो जाएगा और वेरिएंस तो वैसे ही स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर नंबर्स को आप ऐड करोगे तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखो, अगर दोनों के मीन में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, अगर दोनों का मीन आसपास है, मीन मैं कह रहा हूं कि अब सपोज करो, आप मुझे एग्जांपल के बेसिस पे बताना कि मैं कहता हूं कि यार एक गाड़ी है, उसकी एवरेज 18 है और उसका प्राइस 20 लाख का है, और दूसरी गाड़ी है, दूसरी टाइप की गाड़ियां हैं, उसका माइलेज है अराउंड 18.3 और उनका उस गाड़ी का प्राइस 50 लाख है, राइट। एक गाड़ी थी जिसका माइलेज है 18, उसका प्राइस है 20 लाख, और एक दूसरी गाड़ी है जिसकी माइलेज है, दूसरी टाइप की गाड़ी है जिसकी माइलेज 18.3 है और उसका प्राइस है 50 लाख। मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास एक गाड़ी आई, उसकी माइलेज है अराउंड 18.2, तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए, 20 लाख या 50 लाख? तो क्या आंसर दोगे आप? 20 lakhs. ओके, सो एकता सेज 20 lakhs, others? ठीक है, चलो लेट मी चेंज द क्वेश्चन। मेरे पास एक गाड़ी है, उसकी एवरेज माइलेज है 15 किलोमीटर्स और उसका प्राइस है 20 लाख, और दूसरी टाइप की गाड़ियां हैं जिसका एवरेज प्राइस है, जिसकी एवरेज माइलेज है 30 किलोमीटर्स और उसका प्राइस है 50 लाख। अब मेरे पास एक गाड़ी आई जिसकी माइलेज थी 28, तो उसका प्राइस कितना होगा? गेटिंग इट? मैं क्या कह रहा हूँ, एक टाइप की गाड़ियां हैं जिसकी एवरेज माइलेज है 18, एक टाइप की गाड़ियां हैं जिसका एवरेज है 30। अगर आप दोनों में देखो तो काफी डिफरेंस है, राइट। दोनों की एवरेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और अगर एवरेज में डिफरेंस ज्यादा होगा, अगर मीन वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा होगा, तो आपको उसको कैटेगराइज करना आपके लिए आसान हो जाएगा ना, कि आपको पता है 30 की एवरेज वाली गाड़ियां 50 लाख की आती हैं और 18 की एवरेज वाली गाड़ियां आपकी 20 लाख की आती हैं। तो आपके लिए जो मीन वैल्यूज जो आ रही हैं उनके बीच में डिफरेंस बहुत हाई है। अगर डिफरेंस बहुत हाई होगा तो फिशर्स रेशियो की वैल्यू ज्यादा आएगी या कम आएगी? यस, अगर मैं आपको मैंने दो एवरेज वैल्यूज दी, दोनों एवरेज के बीच में डिफरेंस काफी हाई है, तो फिशर्स रेशियो बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, राइट। अगर डिफरेंस बढ़ेगा m1 माइनस m2, ठीक है ना। आप ये देखो ना, अगर मेरे पास एक मीन है, एक मीन की वैल्यू है 10 और दूसरे मीन की वैल्यू है सपोज 6, सो 10 माइनस 6 कितना होता है? 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, है ना। तो 4 आएगा यहाँ पे, ये आपको देगा 16। लेकिन अगर एक मीन की वैल्यू 3 होती
अब दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना आएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 That है कि नहीं? 10 minus 6 is 4 plus क्या? नहीं सर ठीक चल रहा सर आप 10 minus 6. हाँ स्क्वायर कर दिया सर ने। स्क्वायर अच्छा कर सर दिया ने उसका। square. Okay, got it. 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर आया 10 माइनस 3 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यानी अगर आपके मीन का डिफरेंस बढ़ेगा तो उसका स्क्वायर को बढ़ेगा, डिफरेंस नंबर बड़ा आएगा, तो यानी फिशर रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। अगर आपका बढ़ेगा। डिफरेंस बढ़ा तो आपका फिशर रेशियो इंक्रीज हो गया। अगर आपका डेटा में वेरिएंस बढ़ा, अगर आपके डेटा में वेरिएंस बढ़ेगा तो फिशर्स रेशियो कम होगा या बढ़ेगा? कम होगा। कम तो होगा। कम हो, तो कम हो जाएगा, राइट। अगर आपका वेरिएंस डेटा के बीच में कम है तो बढ़ेगा और अगर वेरिएंस ज्यादा है तो कम हो जाएगा। सो टेक्निकली हम क्या करते हैं, हम हर वेरिएबल का एक फिशर्स रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब वो फिशर्स रेशियो की वैल्यू, जिस वेरिएबल के लिए फिशर्स रेशियो की वैल्यू ज्यादा आती है वो वेरिएबल सिग्निफिकेंट हो जाता है और जिसके लिए फिशर्स रेशियो की वैल्यू कम आती है वो इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है। राइट। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, अगर आपको उसको और अच्छे से समझना है तो। अब आपके पास सपोज करो मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको मैंने कुछ डेटा दिया हुआ है हाइट्स का। आपके पास कुछ डेटा है रिलेटेड टू दी हाइट और उसका जेंडर दिया हुआ है मैंने। मेरे पास कुछ 5 स्टूडेंट्स हैं, एक 120, 121, 119, ये सारी फीमेल्स हैं। फिर है 140, 143, 141, ये सारे मेल हैं। कि ये सारे मेरे पास मेल दिए हुए हैं डेटा के अंदर। अब आप मुझे इसमें से बताओ कि बेसिकली अगर मुझे कोई एक स्टूडेंट मिला, मुझे बोला कि एक नया स्टूडेंट ऐड हुआ है, उसकी हाइट है 139, तो आप क्या प्रेडिक्ट करोगे? आप बोलोगे कि वो मेल है या फीमेल है? मेल है। मेल है। वाई सो मेल? ज्यादा हाइट। अगर हम हाँ नहीं, कैटेगरी। तीनों का ज्यादा हम height- मीन करेंगे तो 139 के अप्रॉक्स आएगा ही। हाँ, तो आपको जो एवरेज आ रहा है वो 139 के आसपास आ रहा है, राइट। तो अगर आप इसका एवरेज निकालते हो, मेल्स की जो एवरेज हाइट आ रही है, तो उनकी मेल की एवरेज हाइट आ रही है 141 और फीमेल की जो एवरेज हाइट आ रही है वो आ रही है आपकी 120, right? This is the average height that you are getting for male and female. So from here we right, so you're getting a higher age of your आपकी जो एवरेज आ रही है जो जेंडर मेल की और फीमेल की वो आ रही है 119 और सॉरी 120। फीमेल की जो एवरेज हाइट आई वो आई 120 और मेल की जो एवरेज हाइट आई वो कितनी आई आपकी, वो आपकी आई अराउंड 141। ठीक है। तो देखो क्योंकि इन दोनों के बीच में काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाइट्स। एक की हाइट 120 है, दूसरे की 141 है, तो दोनों की हाइट में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो आपके लिए आसानी हो रही है ये बताने में कि कौन सा मेल होगा और कौन सा फीमेल होगा। अब सपोज करो मेल्स की भी हाइट होती है अराउंड इतनी 120, 122, 121, राइट। तो इस केस में मेल्स का एवरेज कितना हो जाएगा? मेल्स का एवरेज हो गया 121, फीमेल का 120 है और मेल का आ रहा है 121। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपको प्रेडिक्ट करना हो कि कोई वो मेल होगा या फीमेल होगा तो आपके लिए दिक्कत, थोड़ा आपके लिए टफ होगा ये प्रेडिक्ट करना, क्योंकि दोनों की एवरेज हाइट आसपास है। गेटिंग द पॉइंट? दोनों का एवरेज आसपास है तो आपके लिए प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि यार वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों की जो एवरेज हाइट आ रही है मेल की और फीमेल की वो लगभग आसपास है। तो क्या आपके लिए हाइट सिग्निफिकेंट वेरिएबल होगा? क्या बोल सकते हो कि मैं हाइट के बेसिस पे बता सकता हूँ कि वो बंदा मेल है या फीमेल है? क्या बता पाओगे ये चीज? नहीं सर।
नहीं बता पाओगे, राइट? सो यही एग्जैक्ट सेम चीज फिशर्स रेशियो जो है वो पिक कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर आपका मीन का डिफरेंस ज्यादा है, दोनों की जो एवरेज जो आ रही है वैल्यूज वो एक दूसरे से बहुत दूर है, तो आपके लिए प्रेडिक्ट करना आसान है कि वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, कि वो मेल है या फीमेल है, क्योंकि दोनों की एवरेज हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन अगर वहीं पे डिफरेंस कम हो जाएगा तो उस वेरिएबल का सिग्निफिकेंस कम हो जाएगा, क्योंकि आप उसके बेसिस पे बता ही नहीं पाओगे कि यार वो मेल है या फीमेल है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप सब लोगों को? सी आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द फॉर्मूला इन अ वेरी लेमन्स लैंग्वेज। फिर दूसरा होता है वेरिएंस। वेरिएंस का क्या मतलब होता है कि देखो मेरे पास ये फीमेल्स का डेटा था, अब एक फीमेल मेरी 120 की है, उसकी हाइट 120 है, एक फीमेल है जिसकी हाइट 140 है, फिर एक फीमेल है जिसकी हाइट 160 है। ठीक है, अब देखो इनकी हाइट्स में कितना वेरिएशन है, एक फीमेल आई 120 की, एक आई 140 की, एक आई 160 की, और फिर मेल भी ऐसे ही हैं, एक मेल था जिसकी हाइट थी सपोज 130, दूसरा था उसकी थी 110, एक था उसकी हाइट थी 170। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो फीमेल्स की भी हाइट में वेरिएशन बहुत हाई आ रहा है। क्या कोई बहुत मेल छोटी हाइट के भी हैं और बड़ी हाइट के भी हैं, फीमेल्स भी छोटी हाइट की भी हैं, बड़ी हाइट की भी हैं। तो अगर आपके डेटा में इतना हाई वेरिएशन आ गया तो आपको नहीं लगता कि आपके लिए फिर से मुश्किल हो जाएगा ये प्रेडिक्ट करना कि बेसिकली यार वो बंदा मेल है या फीमेल है, राइट? क्योंकि आप देख रहे हो यार, मेल तो बड़े भी हैं, टॉल भी हैं और शॉर्ट भी हैं, और फीमेल भी टॉल भी हैं शॉर्ट भी हैं। तो वेरिएशन इतना हाई है आपके डेटा में, तो विल यू बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर अ न्यू पर्सन इज अ मेल और अ फीमेल? नो सर। नो। ठीक है, तो यही एग्जैक्ट सेम चीज इज समथिंग दैट हैज बीन पुट इनटू दिस फॉर्मूला। अगर आपके डेटा में वेरिएंस बढ़ेगा तो आपका फिशर्स रेशियो कम हो जाएगा, अगर आपका मीन वैल्यू कम हो जाएगा तो आपका फिशर्स रेशियो फिर से कम हो जाएगा। तो जिस वेरिएबल के लिए फिशर्स रेशियो ज्यादा आएगा दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट वेरिएबल, और जिस वेरिएबल के लिए फिशर्स रेशियो कम आएगा दैट विल बी अ इनसिग्निफिकेंट वेरिएबल, राइट? सो दिस इज द वे बाय व्हिच वी आइडेंटिफाई the significant and the insignificant variables. Got this? Is this getting clear to all of you? यस सर। ठीक है, अब मैं आप लोगों का एक डेटा सेट अपलोड कर रहा हूँ यहाँ पे, राइट? आई एम जस्ट अपलोडिंग अ क्विक डेटा सेट ऑन द गूगल ड्राइव। प्लीज आप उसको एक बार लॉग इन कर लो आप उसमें, 1 मिनट में आपको डेटा सेट अपलोड कर दूंगा यहाँ पे। R Ematicus में if you will come into the folder of the R data sets, तो वहां पर मैं एक डेटा सेट अपलोड कर रहा हूँ। Okay. So class, I have uploaded that wine quality data on the drive. Please download that. So I have uploaded wine quality data. Please download that data set. And then what you all have to do is you have to calculate the Fisher's ratio of each variable. You will have to calculate the Fisher's ratio of each variable. Now you can use R. Let us see who is able to get me that Fisher's ratio of all the variables. तो कुछ ज्यादा ही लेंदी नहीं हो जाएगा ये? क्या चीज? सर ये लेंदी प्रोसेस नहीं होगा इसमें कुछ ज्यादा ही परफेक्शन मेथड में? नहीं, मैं लेने तो नहीं होगा। सर ट्राई। R में ट्राई करोगे तो देखो हो जाएगा। अगर आप एक्सेल में मैनुअली करने बैठोगे तब तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे इसमें। लेकिन अगर आप R में करना चाहोगे तो इसमें R में आप इसको 10 मिनट में कर सकते हो, 5 से 10 मिनट। लेट मी गिव यू अ हिंट ऑफ दैट। आपको मैं हिंट दे देता हूँ। आपको यूज करना पड़ेगा अपना एक पैकेज जिसका नाम है
psych पैकेज, ठीक है। यू विल हैव टू यूज अ psych पैकेज। ये हम लोगों ने इंस्टॉल भी किया था बहुत स्टार्टिंग में, अगर आप लोगों को याद हो। psych पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। So if I'll run this library, I'll put this package into my library. तो इसके अंदर एक फंक्शन आता है डिस्क्राइब। ये डिस्क्राइब जो फंक्शन है ना, ये काम का फंक्शन है आपके। तो अगर मैंने डेटा सेट अपलोड किया यहाँ पे, मैं आपका डेटा सेट अपलोड कर लेता हूँ एक बार, ताकि अब थोड़ा सा मैं स्टार्टिंग आपको दे दूँ। देन यू आई कैन लीव इट अप टू यू कि आप कैसे उसके ऊपर अपना आउटपुट लेकर आते हो बेसिकली। डेटा सेट क्रिएट करता हूँ मैं अपना यहाँ पे वाइन के नाम से, ठीक है। read.csv और फाइल का नाम क्या है, LDA, ये डेटा सेट, ठीक है। ये डेटा सेट है आपका। अगर आप इसके ऊपर रन करते हो अपना डिस्क्राइब फंक्शन फॉर, इस पूरे डेटा सेट पर रन कर देता हूँ मैं इसको। साइक सारे वेरिएबल्स तो नहीं चाहिए मुझे, खैर मुझे स्टार्टिंग के वेरिएबल्स चाहिए, तो फिर भी मैं कर देता हूँ वाइन के ऊपर, पूरे के ऊपर। यहाँ पे आपका, ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि उस वेरिएबल का, हर एक वेरिएबल पे आपको ये बता देगा कि हर एक वेरिएबल की मीन वैल्यू कितनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, मैड कितना है। सो इट गिव्स यू ऑल दिस इंफॉर्मेशन ओवर हियर, रेंज, स्क्यूड, स्टैंडर्ड एरर। सो ये कहीं ना कहीं आप इसको अगर आप यूज करोगे तो इससे आपका काम फटाफट से हो जाएगा। लेट मी सी हु इज एबल टू डू इट। सर
sir
Yep, class. Anyone who has done this? Is anyone trying it? Is anyone able to find this answer output of this? So guys, let's do one thing. Let's have a quick short break also in the meantime, and let us start at 11:45, right? So let's take a 15 minutes of a break, and then let's start after that. We can all just grab some coffee and all.
Hello, yeah, hi all. I hope you are back from the break. So, guys, shall we start? Okay. So now we were discussing. So has anyone been able to calculate that the score or uh, the Fisher score? So let me show you that. So how you can do it. Okay. So right, I'm just showing you the code over here. So what we are doing is, first of all, we loaded the data, right? So we will be using psych package, right? So we will be using the function that is describe. Now describe is a function that gives a lot of statistics. It gives you the mean value, median value, and all the other stuff. So now what we will be doing over here is, if I run the describe function. So now describe function is something that gives me that all the statistics about the variables that we have. What is the mean, standard deviation, median, and all that stuff. But what do I exactly want? I am looking out for only two of the things, that is mean and standard deviation, and that too separately for wine quality equal to low and wine quality equal to high, right? So what I'm doing over here is I am saying I am creating one function L in which I am saying use the describe function on the dataset wine. In this, what I want to do is I want to calculate all the statistics for the data where wine quality is equals to L. I do not want to use the last variable, that is the quality, wine quality. And then what we would like to do over here is we are saying we want mean and standard deviation. So mean is coming at which column? When you run the describe function, mean comes at third number and standard deviation comes at fourth number. So I'm saying I only want to keep two columns, 3 and 4, right? We do not want to keep all the columns. So if I'll now run this, this will give me the data. Oops, something went wrong. Right. So let us check this value out, L. So now this is giving me the information that for fixed acidity, mean is this and standard deviation is this. For volatile acidity, mean is this and standard deviation is this, right? And this is for the data where the wine quality is low. Similarly, I do the same thing where wine quality is high and I will get all those statistics, correct? So if I run H, okay, so you get the H over here. So this is the mean and standard deviation for H over here. Now what we will do is, can you do it now? Can you calculate the Fisher's ratio from here? If I say view L, okay, so I'm just copying the mean and standard deviation for low, right? This is what I'm copying it up. I'll copy this and put it up over here.
This is the mean and this is the standard deviation. What will be the variance? Variance will be equal to this into the same square of this. This gives me the variance, right? And now this is the data for the low, and over here what I will do is I will calculate the same thing where it is high. So I'll go over there and I will say view H, and let us copy the same thing from here now into that CSV file. So you will have to use both the things, right? So you will have to make use of Excel and did I miss anything? Oops, I have to paste it from here. Okay, so I've got the two stuff. Now can you all calculate the Fisher's ratio? See, it's simple, equal to m1 minus m2, right, to the power square. So these are the mean, this minus this to the power 2 divided by, oh sorry, we haven't calculated the variance over here. Variance will be equal to this multiplied by this. Okay, so what will be my Fisher's ratio? It will be equal to this minus this to the power 2 divided by this plus this I4 plus, sorry, we have to add variance plus this J4 plus this. So we get the Fisher's ratio, that's it. So which are the most significant variables? I can see this variable very high. We are getting a very high value for this. This is very significant. This is very significant, right? This is, and then others, this is also significant, and likewise. So we can see this is how you can calculate the Fisher's ratio and identify which are the most significant variables that you have in the data. Are you able to understand it? Ekta, Bhuvan, Varun? Yes. Amen. So we'll be working only these three variables to create the I mean, model. you can use more than this also if you think that you need to use 3 or more variables. So because in this case, you see, if I only have, I just have how many variables do I have? This is, we have 11 variables. See, 11 variables is not a very big number, right? So 11 is not a very big number. So, but if suppose you had 100 variables, you could have filtered out the top 20-30 variables from there and created the model on top of that, right? Depends upon the data size. Yes, depends upon the data size, correct. Okay. So this is the first use case that we have all seen right now over here on how to use the LDA, that is by the help of Fisher's ratio. Now the second use case that we have for the the LDA is to create the model. Okay. Now, you know, there are basically, how does LDA predicts whether it will be a yes or it will be a no. So it also works on the basis of probability. Okay. So because, you know, this is also classification model, so definitely you will get the output in the form of the probability only. So let us see how we can do the classification with the help of LDA. So I'm just uploading one more data set in the drive. Okay. All of you, please download that data.
सर कौन सा डेटा? ये मैं आपका भी ड्राइव पे डाल रहा हूँ, बस एक आपका उसी फोल्डर में चले जाओ, आर डेटा सेट्स में। यू विल फाइंड द डेटा सेट ओवर हियर जस्ट इन 1 minute. Okay, so I've just uploaded two files, LDA14 class demo. One is Excel and one is CSV. So मैंने वहाँ पे दो फाइल्स अपलोड की हैं, आप दोनों को डाउनलोड कर लो प्लीज। Are you able to download it, the two files? See, right now we will be using only one of them, that is CSV file, right? So CSV file is the same data, right? This is the same data that we were using in terms of the income lot size, and we have to predict whether a person will purchase the item or he will not purchase the item, right? Whether person is a owner or he is not a owner. Now this is the data set that we have. So let us see how we will use the LDA modeling technique in order to predict this. So in order to do that, what we will be doing is, first of all, we will come up to the R. You can load the file, right? You have to use the CSV file. So you can just load this data. So you have a function that is read.csv, and you have a function. If you do not know, if in case you think that you have not made that folder as your working directory, you can use file.choose. If you will run this, what will happen is it will ask you which file do you want to upload. So I'm saying I want to upload this file, CSV file. So you can open that up, right? So let us check owner. So you can see owner is created. So you can load the data by writing this simple line of a code. Let me put this code over here. तो कौन कौन से डेटा सेट थे? अभी तो आपको एक ही यूज करना है, वहां पे दो डेटा सेट अपलोड किए थे मैंने। एक का नाम था ये LDA14 क्लास डेमो के नाम से, CSV फाइल है ये आपकी आ रही होगी इस नाम से, देखो LDA14 क्लास डेमो। तो आपको CSV वाली फाइल डाउनलोड करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कहीं यहाँ कहीं आ रहा होगा, ये रहा। तो ये आपकी CSV है और ये आपका एक्सेल है। तो LDA14 नहीं शो हो रहा मेरे में, पता नहीं क्यों LDA14 नहीं शो कर रहा है इसमें। एक बार रिफ्रेश कर लो फाइल को, पेज रिलोड कर लिया अरे आपने? पेज को रिफ्रेश कर ले तब आएगा, वरना नहीं आएगा। आ गया? यस सर।
So let us check the summary. We can check the summary of the data कि कोई NA values या कुछ blank या missing values तो नहीं है. So we can see there are no missing values. 3 variable हैं, 2 जिसमें से numeric हैं और एक मेरा target variable है जो मुझे predict करना है कि whether a person will buy or he will not buy. Okay. In order to use LDA function, right? In order to use LDA, the model, there is a package that you all will have to install, and that package is mass. Okay, you all will have to install a package, new package, that is mass. Okay, please install this package. Now what we will do is, like, when I was showing you the PPT, right? Remember when I was showing you this PPT over here, this was a chart that we saw. Now we will create a similar looking chart in the R also. Similar chart we will create in the R. So in order to create that, what we are doing is I'm saying plot. On the x-axis I want to keep income, on the y-axis I want to keep lot size. You will get a scatter plot, and on the color I will fill whether a person is a owner or a non-owner, right? So I'm creating a scatter plot over here. So we will create a scatter plot. Plot owner dollar income. Okay. Color equals to owner dollar color over the rest. No.
This is let me just check this why this is not giving the color over here, right? So I'll just check this out. उससे क्या होगा बस आपके कलर दो डिफाइन हो जाएंगे जो जिन्होंने लिया है they will come in one color and जिन्होंने नहीं लिया है they will come in the another color. That is just that what I'm trying to do. So I think there is some syntax error that is happening in this. Although it is correct, I'm not sure why it is creating a problem. Okay. Now see what we will do over here is let us start building the model of LDA. Now building an LDA model is very easy. So there are two ways by which we can create the model. One technique is called as jackknifed technique, right? So there are two ways by which the LDA technique can be used. So in the jackknifed technique, what happen is what model will do is it will predict whether a particular row, whether a particular outcome will it be true or will it be yes or no on the basis of remaining of the data, right? So let me explain you what do I mean by that. In this technique, what the model will do is, say for first example, it has to predict whether a person will buy or not buy. So in this approach, what will happen is the model will use the remaining of the 23 rows. Okay, it will use remaining 23 rows of data in order to predict whether he will buy or not. Then similarly, when you will come to the second row, in that case, model will use the remaining 23 rows, this data and this data in order to predict whether a person will buy or not. Okay, this is what is called as jackknife technique, or this is also called as cross validation. Let me call it as cross validation also. In the cross validation, what happen is it is validating with the other data. So it is comparing, okay, for the first row, it will take rest of the data as a training data set and it will try to predict whether a person will buy or not buy. Okay, this is something that is called as the jackknife technique. And how do we use it? See, everything is same. You will use LDA function. This is your formula that owner's true is dependent on all the variables. Which data set are you using? You are working on the owner data set. And then you are saying CV equals to true. When you say CV equals to true, that means you are using jackknifed approach. And if you will say CV equal to false, that will mean you are not using a jackknife approach. In that case, you are using a normal approach by which the predictions will happen. Okay, but right now we will keep it as true, and then we are putting up a function to handle the missing values. So if in case in your data there are any missing values, you can say na.action equal to na.omit. That means we are saying if there are any missing rows in your data, please ignore them, omit the na values. Okay, please all of you write this. If you want, I can share this with you over the chat also.
Okay, so once you all create this model, okay, you can check the summary of this, right? What this model is giving you. I'll not run this. Let me just run this up. Okay. See. So when you create the model, this is what this is the kind of an information that you will get over here, right? So basically the main thing over here is just one. I'll tell you what exactly that is. Have you all executed this code? Have you all created the model? Yes. See, when you create the model, what the model will do is, let me explain you. So what the model will do is, first of all, from the data, it will see how many yes and no do you have. It will see what is the data that you have before the model is created. Okay, it gives you, it counts that yes and no. Then, as I mentioned, right, now it is predicting the probability. What is the probability that the first row is a no or a yes based upon the probability of, I mean, based upon understanding the rest by reading the pattern of the rest of the rows. So it is giving a probability that for the first row, there is a probability of no, there is a 80%, 84% probability that the customer will not buy, and 0.15 probability that he will buy, right? Similarly, for the second row, there is a probability of 0.617 that a person will not buy, and probability of y that it will buy. Okay, this is how it gives the probability output in the form of probability. It gives in the output of score, right? It gives the output in the form of a score. So whichever, remember we were talking about that score in one of these slides, that what we do is we generate the scores, that whether a person has high score for equipment or entertainment or both. So for whichever category the score comes high, that is taken as the final output. So in the first case, if you see, where do I have the highest score? For n. Over here also the score is high for n. In this, the score is high for y, and same way it is high for y and likewise. So this is what our predictive results would be. This is what the model will say. My model is saying that for the first row, my model is predicting no. For the second case, my model is predicting no. And this is how the output is being showcased to me in the form with the help of LDA. Okay, it is giving the score of probability. It also gives some more additional information. It will give you the mean values, it will give you the standard deviation and all that stuff, which we do not require, which we do not use much in the data set, right? So this is the main thing that we use in this model, the probabilities that we are getting. Then what you have to do is you have to all calculate the accuracy of the model. I hope this is something that you can all do it now. So accuracy by using the confusion matrix, the confusion table that we studied. Using that table, you all have to predict the accuracy of this. Are you all able to calculate the accuracy? Right, so you will use a table command. So you are calculating the actual data versus
prediction, right? Fit dollar class. When you say fit dollar class, this was the name of the model, dollar class. It tells you the output in the form of no and yes, like what that model is predicting, whether the model is predicting no or whether the model is predicting yes. So it gives you the output in that format. So simply create a table for that. Let us see what is the accuracy that we are getting. So if I add 9 plus 10, 19. So 19 divided by 24. So 19 divided by 24. So we are getting an accuracy of almost 80%. Okay, are you all able to get it? The accuracy that we have calculated using the confusion matrix only. Okay, I will just explain you one new way of doing the same thing. See, what happen is what we do is first we create the table, and then what we do is we manually add up the numbers and divide it by the total, right? That is the manual way that we follow. I can actually tell you a quick way of achieving the same thing. So what you can do is when you write the function of table, okay, you said table owner dollar owners true, comma, fit dollar class, right? This gives you a table. If you will wrap this function inside one new function, and the name of that function is proportion.table, prop.table. Now what this prop.table does is it will give you the percentage of this, percentage of this, percentage of this. So overall will be 100. It will give you the proportion percentage of this. So it is saying 37% are no to no, 12% are yes and no, 0.8% are no and yes, and 41% are this. So you can add these two numbers. So 41 plus 37, you will get somewhere around 88, 89 only. Sorry, 79, right? And plus you can also wrap this inside one more function, that is diagonal. So what this diagonal does is it will add the diagonal numbers automatically, and it will give you the correct number. Oh, sorry, it will give you the diagonal numbers no to no and yes to yes. And then what you can do is, this is a little tricky way, you can wrap it inside sum function. So you will get the sum also. So this is also a quick way if you want to find the overall total without manually adding and dividing the numbers. Okay, another way of taking the of checking the predicting or another way of predicting the results using the LDA technique is, that is cross validation equal to false, which is by default false only, right? So in one case we said CV equal to true, that is called as jackknifed approach. And another way by which you can predict the result is, you can say that is taken as false. In that case what happen is, the model will use entire data
to predict the result. So it will use that row also in order to predict whether a person will buy or not. Okay, so that is the way. So in this, the entire thing is written only in one single row. You can create the model. Oops, I'm just creating a new data set, owner one, and let us create the model on this, and then you can check the accuracy of this. So it is giving you 11 plus 10, that is 21. 21 divided by 24, so it will give you a higher accuracy. So out of the jackknifed approach and the without jackknifed approach, you will see without jackknifed approach is giving you better accuracy. So 21 divided by 24, this gives you the accuracy of 87%. So class, are you able to do it? Does anyone any questions over here? Anyone who would like to ask anything? Okay, so if you want to create a chart on this, right, you can also create and visualize the chart. If you say plot fit the so basically, oh sorry, this. Yeah. So what we will be doing is we will actually have to I'll show you how you can create an interesting chart on this in order to visualize your the analysis that you have done. You will just have to install one package, that is KLAR, right? Please install this, just a one-liner stuff. Just install this KLR. Okay. Now this package is specially created to visualize the results of LDA. Okay. Put it into the library. So it will give you a function by the name of partition mat.
Now partition mat is something that will help you create a chart on the basis of the model that you have created, right? So the model we created on the dataset owner, let us create this on the top of that. Oh, what's going wrong? We have two classes only in this. Bonus underscore two. Owner only, right? Only three observations, three variables. Just give me 1 minute, class, and I'm just checking it out. What is going wrong in this? Almost true. It's dependent on all the variables. And data is equals to owner. This is the technique which actually showcases the result. It actually shows the model in the form of a visualization. So
This is the same thing that we have written. Please. So I have two classes only in this. Why this is creating a problem? Yes and no. Anyone who can find any this problem in this? I think there is something that I'm doing wrong. Can you remove underscore true? Now can we check? No, Oh that no, is the name. That is lame. the Yeah, name. view. Oh no. Let me just check it out. We issue. At least two classes required. So we are putting owners true. So we need one more class. No, in that we have two classes, yes and no. So those are the two In classes the that owners to write yes or no. Yeah, we have data is equals to. There is a space between is equal to and owner. that should not be a problem. That I also checked that without after removing the space and without the space also I have checked it. And That is woman that I've checked. ultimate owners true. Just see 1 minute. Otherwise, I will have to dig it down. What is going wrong in this?
Let us do one thing. Let us just, just check this out. If this function is not something, let me just pick this up itself. Is it working over here or not? Let us check this out. See. This it is working. Yep. So this is working over here. Basically this is how the chart is created. This is a similar chart, that I was showing you also. This is exactly that I'm trying to build over here. So what is going wrong in this here? What is going wrong? Party mat. Uh, owner. Can we copy owner's true in species? Then data is equal to owner in iris. Then I'll just do that. Sir, sir, Here it is. Here it is. हाँ, It was the data was not in the form of a factor. That is why it was creating a problem. yes सर मेरा भी होगा मैंने अभी ऐसे ही किया था अभी अच्छा फैक्ट्री क्रिएट किया था. यस सर अभी अभी किया अभी दिमाग में आया था वही बता रहा था Okay. So look, right. So this is that model that we have created. Now sometimes small things you just not able to think of. So you see now this is what the model is telling, right? That these two the model is predicting wrong, and over here this red one is predicting wrong, and it is giving you the error rate also that there is an error of 12.5%, right? So it is telling you that how much error your model will have. So what LDA does is it creates a linear line over here, best fit line, which passes through the data, and any of the values that are misclassified, which are coming above or below, they are called as error. Okay. Right. So this is what we have to do on this.
Okay, guys. So this is what we have in the LDA, right? So LDA is, a technique that you will not be using very often for your analysis. You will be largely using your LDA technique for variable selection, and then you will actually, after selecting your variables, you will be selecting whether you should be using your logistic regression technique or decision trees. That is how you will be moving ahead with the things. So any queries, any doubts, anyone? Up to this point, anything that you would like to ask? Okay, guys. So no questions? Okay. So, this was the last, the modeling technique that we had to cover in the R programming, right? So we have seen 4 of the things. One is linear, logistic, decision trees, and finally the LDA, right? So, yep, so these are the main things that we have. So what is the only portion that is left that is the modeling technique, that how you build the model using the decision trees. That is something that I have to show you, right? So this is that is a small portion that will not take more than half an hour or 45 minutes. So that is the only part that is left. So yes, so guys, you're not speaking anything. I hope you all are able to hear me. Yes, we can hear you. Okay. Amit, So just one question. Can you please explain me S dot factor, why we have, what is the role of S dot factor in this, like the model that we have just created? see, as dot factor is basically what factor does is factor converts the data into category. Okay, it will treat that Y is one category, no is another category. So we have just done the same thing. I have just converted that column of owners underscore true into the form of a factor. So previously it was coming in the form of a character. Now I am saying, see, data type will remain the same only, it will remain the character only. It is just that I am telling R that yes and no that is written in that column. Yes is one category and no is another category. So they are two classes, yes and no. Okay. Yeah, so that is why I just Okay. converted that to as dot factor. Okay, so guys, so like how will you like to take, so because I think like next week probably your Python training will start, right? So maybe next week or next to next week, so your Python trainings will start after that. So there is a long journey that we have done up to the closure of the R that we have came up today. So what I was thinking was maybe we can have some doubt sessions, right? And in the doubt session itself, we will not require more than half an hour on the decision trees. We can cover up the topic of decision tree over there. So how do you want to go, right? Do you want to cover the decision tree first and then go to the doubt sessions, or you are good to cover that half an hour of session and plus the doubts together? Shall I suggest here? Can we break tomorrow's class in like 2.5 hour or 3 hour for decision tree modeling, and then further for 1 hour or half an hour for the doubts that we are having. We can do that also. So, but doubts, will you be able to collect all the doubts by tomorrow? Mm. I mean, you can. So it is not necessary that we will be having one doubt session only. We can have more also. It is just that because I'm just asking in terms of the time management. If you feel, you would like to have it tomorrow, we can do it that way. If you would like to have it next week, we can do it that way. I'm open to everything.
What others are saying, like, let's see here. Yep. Bhuvan, Arvind, Abhishek, Varun. सर सर हाँ सर मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि इवन इंडस्ट्री क्या चाहती है कि मैं हमारे में कौन कौन सी स्किल हो फॉर एन जॉब। जी, आपके लिए देखो अभी तो डेटा साइंस तो टॉप हॉट टॉपिक है, राइट? उसके अंदर आप आर सीख रहे हाँ हो, आप तो पाइथन सर सीखोगे। तो एनी विच वे जितनी स्किल्स आप सीखोगे यहाँ पे दे आर इंडस्ट्री रेलिवेंट टॉपिक्स। कोई भी ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो इंडस्ट्री में यूज नहीं हो रहा है। ऑल द थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज मैंने देखी थी सर, जो टैबलू है, टैबलू के साथ एक पावर एक बीआई सेकंड टूल्स है सर, वो भी। ओके सर। हाँ जी अभिषेक, क्या कह रहे थे आप? सर मैं एक्चुअली बोल रहा था कि हमें कौन कौन सी स्किल की जरूरत होगी, क्योंकि सर हमें तो भाई डायरेक्ट देखो, जॉब। जो आप हाँ चारों जी, हाँ स्किल जी। सीख रहे हो ना, देखो आर और पाइथन सबसे टॉप डिमांडिंग टूल है मार्केट में। टैबलू विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। देखो हर चीज के लिए दुनिया मतलब इंडस्ट्री में बहुत सारी टूल्स हैं। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग की बात करते हो, तो सबसे ज्यादा यूज आर और पाइथन होता है। अगर आप विजुअलाइजेशन की बात करते हो तो सबसे ज्यादा यूज टैबलू होता है, राइट? तो यू आर एनी विच इज लर्निंग द टॉप डिमांडिंग टूल्स। अब देखो विजुअलाइजेशन में टैबलू भी आता है, पावर बीआई भी आता है, क्लिक व्यू भी आता है, लुकर भी आता है, बहुत सारे टूल्स हैं। आप सारे नहीं सीख सकते। तो आप जो भी हाँ सीख जी। रहे हो अपने आप को उसमें परफेक्ट करो। अगर आप सोचोगे कि मैं ज्यादा सीखूं तो आपकी नॉलेज कम होगी और आपको ज्यादा चीजें सीखनी पड़ेंगी। तीन चीजें सीखो लेकिन अच्छे से सीखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर एक चीज और थी सर, मेरा सर एक फ्रेंड बता रहा था कि एसक्यूएल थोड़ा ओल्ड हो गया, अब मोंगो डीबी ज्यादा प्रेफर चल रहा है नहीं नहीं इंडस्ट्रीज नहीं, में। ऐसे तो ये यार गलत है कि सही है? एसक्यूएल कभी ओल्ड नहीं हो सकता। एसक्यूएल तो हाँ क्योंकि ये सर वो मान लो कि फादर। डेटा इंडस्ट्री की बैकबोन है। मोंगो डीबी भी आप नहीं सीख सकते जब तक आपको एसक्यूएल नहीं आता। एसक्यूएल क्या है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप ऐसे लिख सकते हो? आप एक चीज बताओ, वर्ड लिखना मुश्किल है या ऐसे लिखना मुश्किल है या फिर एक बुक लिखना मुश्किल है? क्या काम मुश्किल है? सर एक बुक लिखना। ठीक है, बुक लिखना मुश्किल यस है। सर। लेकिन अगर मैं आपको इंग्लिश ही ना सिखाऊं तो क्या आप कुछ भी लिख पाओगे इसमें से? नो सर। तो वही एसक्यूएल है। एसक्यू हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती है। हेलो क्या कह रहे हो अभिषेक आप? सर, मैं कह रहा था ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक करती है। जैसे सर एक टैबलू का भी एक टूल बताया था मेरे को, पावर बीआई टूल्स। तो सर मैं अगर टैबलू भी अच्छे से सीख लूं तो सर मेरे लिए इंडस्ट्रीज में जॉब रहेगी ना? सारे टूल एक जैसे हैं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना। टैबलू तो सबसे ज्यादा टूल यूज होता है यार। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, एक सेकंड रुको, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, रुको। क्या होता है ना, देखो आप किससे कंसल्ट कर रहे हो आप? सर एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड है जो टॉपर है कॉलेज का, तो वही मेरे को सजेस्ट करता रहता है ये सारी चीजें। वो क्या, देखो अभी जो जॉब मार्केट में नहीं होते हैं ना, सो उनको हाँ जी, देखो हाँ मैं जी। आपको दिखा, तो वो हम्म, सब लोग इधर उधर कुछ सुनते हैं और उनको पता नहीं चल पाता है। अब देखो द बेस्ट डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स कौन से हैं मार्केट में। अब देखो यहाँ पे टूल्स के नाम लिखे हुए हैं, मैंने गूगल सर्च किया एक छोटा सा, गूगल चार्ट्स, टैबलू। देखो टैबलू को पूरा हाईलाइट करके लिखा हुआ है, ग्राफाना, यस यस। चार्टिस्ट और ये। तो टैबलू तो मतलब ये मान लो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। अगर आपने टैबलू अच्छे से सीख लिया ना, मतलब टैबलू जिनको आता है, लोग 20-20 लाख रुपए भी कमा रहे हैं साल का, राइट? और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतलब टॉप के टूल सीख कर भी इतना अच्छा पैकेज नहीं ले पा रहे हैं, राइट? सो इतना मत सोचो, यू आर ऑलरेडी इन द बेस्ट हैंड्स, ट्रस्ट मी, राइट? इफ यू रियली वांट टू, इफ आई विल शो यस यू सर। समथिंग, लेट मी शो यू समथिंग। People are actually switching jobs very quickly by learning these tools, राइट? अभी मेरे को थोड़े दिन पहले ही, एक हफ्ता 10 दिन पहले ही उस मेरे स्टूडेंट का ही मुझे मेल आया था। So see, this is what he has हम्म, sent me, right? So he, after doing the course, see over here, see,
He went through the trainings over here, and then he has got so many job options that he is confused कि मैं कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं, कौन सी नहीं ज्वाइन करूं. तो पहले आप अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो, राइट? उसके बाद इन सब चीजों पे सोचो कि यार मुझे क्या करना है क्या नहीं. ये देखो यहाँ पे, देखो उसका पढ़ो यहाँ पे. आफ्टर द एडवाइस आई स्विच टू द एनालिटिक्स टीम. पहले वो HDFC में चला गया, फिर उसने वहां पे चीजें सीखी, फिर वहां से वो मैकिन्सी में चला गया. अब मैकिन्सी से फिर वो मैक्स लाइफ में चला गया एज अ डेटा साइंटिस्ट. अब उसके पास डिलॉइट से ऑफर था, तो वो मेरे से पूछ रहा है कि सर मैं डिलॉइट में ज्वाइन करूं कि नहीं करूं. ही हैज रिटन दिस, आई हैव रिसेंटली फिनिश्ड माय इंटरव्यू प्रोसेस एट डिलॉइट एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड. तो ये क्या रोल में मैं इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं. और उसने ये कोर्स, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द कोर्स. ऐसा नहीं है कि 3 साल पहले 4 साल पहले कोर्स किया है उसने. लॉकडाउन से पहले 2-3 महीने पहले ही अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया था. अभी उसको 1 साल भी नहीं हुआ है पूरा कोर्स कंप्लीट. नहीं सर, मैंने ये सर सुना था कि एक्चुअली जब आप पोस्ट डिग्री जो करेंगे ना सर, तो उसमें 100% प्लेसमेंट होती है जॉब्स की. अमेरिटस से जो मैंने सुना था सर, कि जो सर इसका अपर ग्रेड वाला जो कोर्स है ना सर, जो पोस्ट ग्रेजुएट ये वाला, आपके वाले उसमें कोर्स, 100% आपके वाले कोर्स का ही, आपके वाले कोर्स का ही बनता है ये DSP का, डेटा साइंस प्रोग्राम. भाई तो मैं कह रहा हूँ ना, देखो क्या होता है ना, हमें पता है क्या है, जो हम कर रहे हैं ना उसमें हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता, और जो दूसरे लोग कर रहे हैं हमें लगता है कि दुनिया को तो सब चीजें वहीं पे मिल रही हैं, है कि नहीं? वो होता है ना, वो कहानी सुनिए ना कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, कि दूसरी साइड हमेशा ग्रास ज्यादा ही लगती है. तो वही केस है. ही इज फ्रॉम दैट सेम कोर्स. हाँ, दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही लगता है. मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्स जितने भी हैं सब सिमिलर ही होते हैं. किसी में एक टूल ज्यादा होगा, किसी में एक टूल कम होगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं आपको आर अलग पढ़ा रहा हूँ. मैं ही पोस्ट जो PGP का जो प्रोग्राम है उसी में आर और SAS SQL मैं ही पढ़ाता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं वहां पे कोई और आर पढ़ा रहा हूँ और आपको कोई और आर पढ़ा रहा हूँ. ऐसा नहीं करूंगा मैं. आर तो सेम ही रहेगा ना यार. अब इंग्लिश की क्लास लोगे, ये थोड़ा इंग्लिश किसी और को कुछ सिखाऊंगा, किसी और को कुछ सिखाऊंगा. इंग्लिश तो सबके लिए सेम है कि नहीं? तो बस अभी आप जो कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और उसके अलावा कुछ मत सोचना. अगर आपको लगे तुम्हारा दोस्त बोलता है, तुम्हारा भाई बोलता है कि भाई ये कर ले वो कर ले, 4 जगह हाथ डाल दोगे तो सब जगह से हाथ छूट जाएगा. ठीक है सर. या. और अभी मेरे को भी एक और कल भी उसका एक स्टूडेंट का उसका व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आया था कि उसका भी एक ये इसमें एक पता नहीं कौन सी एनालिटिक्स कंपनी था, एब्सोल्यूट डेटा, उसमें उसको SAS के बेसिस पे सिलेक्शन हुआ है अभी. सो नॉलेज यार, नॉलेज, जस्ट ग्रैब द थिंग्स. एक बंदे को जॉब एक स्किल से भी मिल सकती है और नहीं मिलने वाले को 10 स्किल्स पे भी नहीं मिलेगी. ओके सर. Okay guys, so I think this is that we will have all for today. So do you want to have a session tomorrow or next week? Please let me know. You can think and decide. You can WhatsApp me on the, आप मुझे chat पे WhatsApp पे भी भेज सकते हो. So we can discuss over there also, right? Not a problem. So you know, because मैंने आज थोड़ा session जल्दी रखा था क्योंकि मेरा एक function है. So I just need to rush for that function. It will start in half an hour, 45 minutes. So we can chat over the WhatsApp also, right? Okay guys, so see you and let's have class. Yeah Bhuvan, actually I don't have any problem. Actually problem ये है ना, वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ना. मेरे को खुद क्लासरूम में मजा आता है, क्योंकि देखो क्लासरूम में मैं क्या करता हूँ, सब आपकी सीट पे, आपको पता है, आप लोगों की सीट पे आके मैं चेक करता हूँ कि यार सबने कैसा लिखा है कोड, कितना क्या किया, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है. मुझे खुद उसमें पसंद आता है कि मैं क्लास वैसे लूँ. बट एक्चुअली ना ये प्रोटेस्ट के चक्कर में ना बहुत लोग फंस रहे हैं. तो आपको पता नहीं है कि आप जाओ 2 घंटे की 3 घंटे की क्लास के चक्कर में आपका पूरा दिन ना वेस्ट हो जाए, इसलिए हमने इस चीज को ऑनलाइन रखा था. मतलब ऐसा नहीं था कि इट वाज समथिंग लाइक कि नहीं हमें ऑनलाइन करनी है इसलिए मैंने मैसेज डाला. प्रॉब्लम ऐसी है कि मैं, क्योंकि आई यूजली ड्राइव, क्योंकि मुझे 2-3 जगह पे जाना था मेरे को, तो मैं अपनी गाड़ी से आता हूँ. मैं गाड़ी से आऊँ और फंस जाऊँ रास्ते में. लाइक एकता को भी प्रॉब्लम हो रही थी, कैब्स नहीं मिल रही थी उसको, कैब्स कैंसिल हो रही हैं, सब चीजें होती हैं. तो इसलिए सबकी बेनिफिट के लिए कि टाइम वेस्ट ना हो, तो हमने उस चीज को वो रखा था. और कल भी मुझे लग नहीं रहा है कि वी आर इन अ सिचुएशन की ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, राइट? इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आप बोलते हो, इंसिस्ट करोगे, तो डेफिनेटली आई विल कम, राइट? दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी. सो आई विल डेफिनेटली कम ओवर हियर. I will definitely come to the center. So you all can decide, right? सबका सब लोग आप लोग वोट कर देना कि हाँ कि यार आपको कल क्लासरूम चाहिए, तो definitely I'll come up over there. ओके सर. Okay? Okay. Amit, can we have this on the Google Drive, that whole model?
I'll just सर put आप that. सोर्स कोड अपलोड कर दोगे? हाँ, तो अपलोड कर दो आप गूगल ड्राइव मैं पे अपलोड ना, कर ये सर जो भी आप मॉडल हमने क्रिएट। ये मैं भी डाल देता यस हूँ, LD का मैं भी मॉडल डालता हूँ उसमें। सर, एक पीपीटी और डाल देना सर, जो आपने भी जस्ट पढ़ाई ना एलडीए की। वो भेज तो दी थी आपको मैंने व्हाट्सएप। अच्छा ये वाली ना, ये अच्छा ये वाली डाल दूंगा। हाँ ये वो पहले वाली तो हाँ भेज जी दी हाँ थी जी मैंने। सर, ये वाली। ठीक है, मैं भी भेज देता हूँ आपको। ओके गाइस, सो ओके ओके बाय। ओके बाय, एंजॉय।